पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बायोएथिक्स में हम हमेशा राइट्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड हो, एनिमल से या एनवायरनमेंट से। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. It is better to discuss the responsibilities of the patients as well, in addition to the rights of the patients. So let's talk about the responsibilities first. It is the responsibility of the patient to give correct information and even the complete information about his or her health status, about his or her medical history. अगर आप किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हैं और ह्यूमन बींग्स आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपको चाहिए कि पेशेंट से ब्लड ड्रॉ करने से पहले उसे अपनी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें. एंड इफ पेशेंट्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दोज इंफॉर्मेशंस, देन पेशेंट हैज़ द राइट टू आस्क अबाउट that information so that he or she can fully understand the information related to the scientific research. Similarly, it is the responsibility of the patients to cooperate with the caregivers. अगर वो caregivers के साथ cooperate करेंगे तो उनका treatment plan success होने के काफ़ी ज़्यादा chances हैं. इसी तरह अगर पेशेंट किसी तरह रिफ्यूज़ कर देता है ट्रीटमेंट प्लान आगे चलाने से, देन ही शुड एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस दैट कैन अकर बाय नॉट फॉलोइंग द ट्रीटमेंट प्लान. So these are the responsibilities of the patient. Number 1, to give the correct information to the physician, to the nurses or to the scientist. Then he or she can ask the information in questions regarding the information. Then it is very important to cooperate with the caregivers so that the treatment plan can be successful. Then he or she has to accept the health consequences if they are not following the treatment plan. At the same time, patient has certain rights as well. For example, patient has the right of respect in a privacy and in a caring environment. Then it is the right of the patient that his or her medical report should be kept confidential. Hospital should maintain the privacy of their medical report. It is the responsibility as well as the right of the patient to know about the names of the caregivers as well and to communicate with them in their own language. Similarly, patients have the right to know the information about the cost जो कि उसकी सारी बीमारी के दौरान आ सकती है. Similarly, they can ask for the evaluation of the discharge slip. Even they can get information about different things, like they can communicate with the outsiders through phone, through email, and they can tell them about their health status. Then patient has the right to make decision कि क्या वो सर्जरी करवाना चाहते हैं, इसी तरह या वो ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं. दिस इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट. सो पेशेंट हैज़ द राइट टू मेक डिसीजंस. लेकिन अगर नाबालिग अफराद इस आपके सामने एज अ पेशेंट हो तो उनके वालिदैन या उनके सरपरस्त को गार्डियन बनाया जा सकता है और वो उनकी हेल्थ स्टेटस के बारे में डिसीजन ले सकते हैं. So patients have the right to decide about their health status, but if they are mentally unstable, then they can give this type of decision regarding their health to others.